At 6:30 a.m. on the national highway that connects Imphal to Churachandpur, Manipur has woken up to fresh arson, mounting tensions, and a brand new flashpoint. These images are not uncommon on the streets and roads of Manipur, even 3 months after the violence and the strife first erupted. As you can see here, protesters who came out on the road in the middle of the night have left tires and barricades ablaze. They have set them on fire to express their anger. We tried to talk to the police women who were stationed. In fact, if you turn around, you can see 2 police women there next to our car. And they said they had no idea what had happened. The one feedback that we get from both the communities, whether we speak to the Kuki community or the Meitei community, is a dissatisfaction with the police. In every instance, they say the police has lost both credibility and authority. In the meantime, these are the sort of images that continue to define the turmoil in Manipur even today. We discover that the protests are over a plan by the Kuki community to organize a mass burial and also bring home the bodies of their people, bodies that have been lying in Imphal's hospital morgues for more than 3 months. And here we have somebody who lives right here to this place on the highway where we have seen these tires that have been left to burn. Sir, what is your name? My name is Mr. Newton, Mojo Newton. Okay, Newton, can you tell us yahan kya hua? What happened? Yesterday, some dead bodies have been stationed at the RIMS and the Jenims hospitals. Yes. They are mostly probably illegal migrants. The Kuki illegal migrants coming from Myanmar, and they want to carry and bury it at the Tobung Bangla. The Tobung Bangla is a native place since immemorial. But the Kukis now, they have been occupied that area, and then in that area they want to bury the bodies. There is the main issue that our Mara Pipes. So they want to take the bodies that are lying here in the hospital and bury them. And this was a protest was by the Meitei community? Yeah, this was done by the Meitei. By the women? By the Marapabis? Oh, Marapabis flocks. So the latest point of confrontation between the Meitei and the Kuki community is that the Kuki community wants to conduct a mass burial for its own people who have died. The Meiteis are protesting this. This gentleman here is alleging that the bodies are those who are not Indian. Do you not think that that it's unfair to say that all the Kukis are foreigners? They have been grossly violated our land. That is specially belongs to Meitei. They're also in valley area, not in the hilly area. They occupied that area, and all people have been thrown to the various courts, saving their lives. So in Newton's statement, you can see the extent of the divide. The Kuki community leaders say they just want to bring their own people home. The Meitei community says these are not our own people. These are people who came in from outside. As the divide continues, even the conversation around the burial of bodies has become a flashpoint, leading to scenes like this, where women protesters have come out in the middle of the night, set tires ablaze and tried to obstruct the passageway for these bodies that are lying in hospitals here to move into the Kuki tribal areas. We ourselves are on our way to Churachandpur to meet the Kuki families that have not even been able to bury their dead. But a few kilometers ahead, we find the national highway completely blocked to any car movement. A massive security buildup is now taking place here on the national highway that connects Imphal to Churachandpur. In fact, we are also trying to reach Churachandpur, but it's unclear whether we or anybody else will be able to do that today. The latest flashpoint is over the Kuki community wanting to organize a mass funeral, a mass burial for bodies that have been lying in hospital morgues for 3 months. The Meitei community is protesting this. The disagreement is also over the venue, the place that has been chosen by the Kuki community to organize this mass funeral, this mass burial. Now, the security agencies are taking no chances. Let me show you what's right behind me. If the camera just moves in and we can just walk and we can show you that literally for more than a kilometer or literally as far as my eye can see, we can only see trucks and trucks and trucks. And on this side, we can also see the rapid
action force. So you have the army here on deployment, you have the rapid action force on deployment, and along the way, we have also seen groups of women, Meitei women, the Meitei out on the road. They're there to stop the movement of any bodies of the Kuki community that may be lying on that side closer to Imphal. So the tension is building up. The state does not need a fresh flashpoint. We are told that officials have been in back channel negotiations to try and find a peaceful resolution. But in the meantime, let me also have the camera turn around. And if you see, this is the place where the checkpoint has been placed. So if you're driving from Imphal to Churachandpur, no further movement is actually being allowed at this point. And as I mentioned, you can see the rapid action force, you can see detour signs here, you can see all of the security agencies that are here out in full strength to stop any further movement on this national highway, a new flashpoint, a worrying new flashpoint of possible conflict and confrontation emerging here in Manipur. And we have walked through the massive security deployment and we're headed onwards to see the point at which women protesters from the Meitei community have basically blocked the national highway. They are protesting, as we've been mentioning, the movement of any bodies belonging to the Kuki community that have to move from Imphal to Churachandpur. And if the camera turns around, you can see that even sort of boulders and big rocks have been placed here to prevent any vehicular movement. And on the other side there are the women protesters who have basically established themselves there to ensure that no cars can move from this side to Churachandpur. And we're here at the point of the blockade on the national highway, a blockade that is being led by women protesters. You can see here, there are hundreds of women who have gathered and they want to obstruct the movement of any bodies of the Kuki community. The Kuki community has been wanting to organize a mass funeral, a mass burial for bodies that have been lying in the hospital morgue for 3 months. आइए यहाँ पे कुछ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात करते हैं. आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, इस तरफ आते हैं. आप देख सकते हैं कि बहुत सी औरतें यहाँ पे हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. और नमस्ते, हम लोग दिल्ली से आए हैं. हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इतना सारी औरतें यहाँ सड़क पे हाईवे क्यों रोक रही हैं? हाँ, नमस्ते सबको, नमस्कार. अभी हम लोग क्यों बैठा है, आप लोग गुस्सा है ना इसके लिए, क्योंकि अभी कुकी मिलिटेंट लोग है ना मर गया था. वो लोग ने बोला है तोरबुंग बंगला हम लोग का मणिपुर का जगह है, मणिपुर माने मैतेई का जगह है, हम लोग का बटालियन है. वही जगह में वो बोला था वो लोग मरने वाला का शमशान बना देगा बोला है. हम लोग बोला था आप लोग का शमशान बनाएगा तो आप लोग का जगह में बनाओ. अच्छा. हम लोग का जगह में नहीं बनाना है, क्योंकि इसलिए वो लोग बोला था जबरदस्ती करके हम लोग का जगह पे वो लोग शमशान बनाने के लिए कोशिश किया था, इसलिए हम लोग मना किया है, नहीं बनाना है. मैं अपना ऑडियंस को समझा दूं. Basically what is being explained here is that there is a dispute where the Kuki community wants to bury the bodies of those who have died from their community. और इन लोगों का कहना है कि वो जो स्थान है वो हमारा स्थान है. कुकी कम्युनिटी का कहना है कि नहीं, वो हमारा स्थान है. और इस बात को लेके लड़ाई चल रही है. और यहाँ पर नेशनल हाईवे पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो मेरा पाइबी की औरतें हैं, जो विमेन्स ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये नेशनल हाईवे दूर दूर तक यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है. और फिर मैं आपको दिखा दूं कि उस तरफ बहुत हैवी सिक्योरिटी बिल्डअप है. सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं चाहती कि कोई भी नया वायलेंस हो, नया तनाव हो. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने एक बात कही कि ये मिलिटेंट है, लेकिन आप एक वो भी पॉइंट था 3 महीने पहले कि आप लोग मिलजुल के रहते थे, आपके भी दोस्त थे, आपके उस तरफ भी हम गए, वहां पे भी लोग सफर हुए हैं, वहां पे भी औरतें सफर हुई है. और आप पूरे एक लोग को मिलिटेंट क्यों ऐसे कहते हैं? एक मिनट, उनको बोलने दीजिए.
अब एक 5 मिनट ले सकता है ना बाकर। बोलो। अभी डे 3 से करके शुरू करके हम लोग लड़ाई चल रहा था। लड़ाई कैसे क्यों चल रहा था, माने हम लोग सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में मैतई और कुकी और नगा लोग सब मिलके रहता है। उस जगह में सबसे पहले बार वो लोग रिलीज आता है। पीस रिलीज आने के समय वो लोग ने क्या हुआ था, हम लोग मणिपुरी का मैतई लोग का गर्ल लोग है ना, हम लोग का लुंगी पहन के वो लोग का ड्रेस है ना, वो कस्टम का ड्रेस चेंज करके हम लोग का मैतई का लुंगी पहन के वो लोग का अपना पुराना घर को जलाना शुरू किया। उसके बाद वो लोग ने फोटो खींच के वो लोग बेच दिया। वो लोग ने बोला है हम लोग की जगह पे मणिपुरी लोग ने हम लोग का घर जलाया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं उन्होंने झूठ बोला, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं इन्होंने झूठ बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सरकार से तो हम लोग को उम्मीद ही छोड़ चुका है। उम्मीद छोड़ चुके हैं। हाँ, उम्मीद ही छोड़ चुका है, क्योंकि जो अभी हम लोग के मैतई के ऊपर जो वार कर रहा है कुकी, ये ज्यादातर मणिपुर में रहने वाले कुकी नहीं है, ब्रह्मा से आया हुआ कुकी है, म्यांमार से आया हुआ कुकी मिलिटेंट है। ये जो अभी जो कुकी के जो सपोर्ट जो कर रहे हैं ना, ये मिलिटेंट से म्यांमार से आया हुआ मिलिटेंट है। और हमारी मैतई हिंदूज और चुसापुर में जो पहले से सेटल है, उन लोगों का घर को कुकी लोगों ने जलाया, निकाल दिया। अभी रिलीके में उन्होंने अपने ही लोगों को जलाया। हाँ नहीं ना, कुकी लोग तो वहाँ है। अच्छा। ये चुचामपुर जो है ना, ये मणिपुर का स्टेट है, हमारे मणिपुरी का स्टेट है, मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट। ये भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, चुचामपुर में जितने भी मैतई लोगों होता है, उनका घर चुन चुन के उनके घर जलाया है, उनके घरों का सामान चुराया है, घर में मतलब रखने वाला मंदिर तोड़ा है। और जो मैतई कम्युनिटी का एक गांव होता है, उसी गांव में हम लोग का मतलब पूरा एक गांव के लिए मंदिर रखा है। ये भी उसी मंदिर को भी उन लोगों ने तोड़ा है। मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे झंडे भी बांटे जा रहे हैं। मैं एक सवाल अंत में पूछना चाहती हूँ कि अभी सरकार को क्या करना चाहिए? अभी हम लोग का सरकार को क्या करना चाहिए? हम लोग पीस चाहिए माने शांति चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। क्योंकि कुकी लोग ने हम लोग का मणिपुरी मैतई चुसापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नर्स है, वो लोग काम किया था। वो लोग ने ना गैंग रेप किया है। उस टाइम तो हम लोग मैतई लोग नहीं था, इसलिए ना वो लोग ने चांस लिया है, माने कैमरा वगैरह ऐसे नहीं था। इसकी वजह से हम लोग का नर्स लोग गैंग रेप करके वो लोग मार दिया, कुछ थोड़ा मार दिया। हम लोग सरकार से ये मांग रहा है, क्योंकि अच्छा से हम लोग कुकी मणिपुर में रहता है, कौन सा कुकी था, हम लोग इंडिजिनस कुकी नहीं है। वो लोग म्यांमार से आके इधर में कब्जा कर रहा है, इसलिए बोला था अच्छा से वो लोग करके। सरकार से क्या मांग रहा था? हम लोग मणिपुरी का जगह में वो लोग क्या बोला था, वो लोग अलग से एडमिनिस्ट्रेशन मांगा था ना, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक साथ रहेगा, ऐसे कोई भी हम लोग को बॉर्डर में कोई ऐसी टच नहीं करना है। आप आगे चलते हुए बताइए, मुझे बताइए एक मांग हमारे सरकार से मोदी जी से मांग है कि हमारे बॉर्डर फेंसिंग जो है उसे आप ठीक से बॉर्डर फेंसिंग कीजिए। और दूसरी बात, हमारे मणिपुर में एनआरसी का रूल जो है वो चलाने दीजिए। All right. Thank you. As you can see from the voices of these women, the divide between the two communities is now really, really intense and strong. Here, they don't validate the grief, the loss of the Kuki community. There, they see the Meitei majority as the aggressors. The line has been sharply, in a sense, drawn across the heart of Manipur. Whether or not there is a separate administration for the Kuki people, there is already a division of hearts. And what we really need at this point are negotiators, are people who will reconcile these communities, who will start a dialogue between them. Because at this moment, a conflagration is building up even over the fact of a burial. And although the word militant was used by many of the women for the Kuki community, we can tell you from interviews we've conducted that the Kuki community also feels very pained at being described such. In fact, they say again and again, why do you keep questioning our patriotism? The husband, in fact, of one of the survivors of sexual assault, as seen on that Manipur viral video, is an army veteran.
of 28 years. But this level of name calling, of anger, of rage captures, in a sense, the divisions on the ground. And I want to leave you with two images here. On this side, all the way there, you see the women who are obstructing the highway. And then let me ask the camera to come back this way. And on this side behind me, we leave you with the images of a massive security buildup, a flashpoint now developing over a demand by the Kuki community to allow them to conduct a mass funeral, a mass burial.